हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं श्रेया और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, रीड करेंगे। एनसीईआरटी में सबसे पहले है, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीबी पैरस। जैसे आपको पता है ह्यूमंस कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीबी पैरस होते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड formation of gamete which is called as a gametogenesis, that is sperm in male and the ovum in female. reproductive event formation of gamete को हम gametogenesis कहते हैं। sperm होता है मेल के अंदर, ovum होता है फीमेल के अंदर। transfer of sperm into the female genital tract is called insemination। जो ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म का फीमेल जेनेटिक ट्रैक में, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस इज फॉलोड बाय अ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल विच इज कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जो अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल में, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज अ पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर द प्यूबर्टी। देयर आर द रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल and in female. For example, sperm formation continue even in the old man, but the formation of ovum ceases in women around at the age of 50 years. Let us examine male and the female reproductive system in human. The male reproductive system is located in the pelvic region. It includes pair of testes along with accessory duct, ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं, ग्लैंड होते हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटिलियाज होते हैं। The testes are situated outside the abdominal cavity within the pouch called scrotum. The scrotum help is maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 degree Celsius. This is very important point कि जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से क्या होता है, कम होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इन अडल्ट each testis is oval in shape, while in a length of 4 to 5 centimeter and width is about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by the dense covering. Each testis about 2 to 50 compartment called testicular lobule. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by the two types of the cell which is called as a male germ cells, spermatogonia and the Sertoli cell. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition. तो जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करके क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाते हैं, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। The region outside the seminiferous tubule called interstitial space contains small blood vessels and the interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Other immunological component are also present. जो Leydig cells होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन secrete करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। The male sex accessory duct include rete testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, seminiferous tubule of the testis open into the vasa efferentia through rete testis. The vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis is located along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to the vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from the seminal vesicle, open into urethra as a ejaculatory duct. These duct store transport the sperm from the seminiferous
tubule to the testis to the outside through the urethra. Urethra originate from the urinary bladder and extend from the penis to external opening which is called as a urethral meatus. तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसके बाद जाते हैं रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया के बाद एब्डिडाइमस, एब्डिडाइमस के बाद वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा. फिर उसके बाद पढ़ेंगे द पेनिस क्या होता है, एक मेल एक्सटर्नल जेनिटिलियाज होते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस विच इज़ कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ द स्किन कॉल्ड फोर स्किन. द मेल एसेसरी ग्लैंड, जो मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं इनके अंदर क्या होता है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड होती है. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द seminal plasma which is rich in fructose, calcium and the certain enzyme. The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis. फिर अगला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरी अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओविडक्ट होते हैं, यूट्रस होते हैं, सर्विक्स होता है और वजाइना होते हैं. साथ ही साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होते हैं जो लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं. These part of the system along with the pair of mammary gland integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete, ovum and several steroid hormone, ovarian hormone. The ovaries are located one of each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and it is connected to the pelvic wall, uterus by ligament. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and the inner medulla. The oviduct, fallopian tube, uterus, vagina constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel shape infundibulum. The edge of the infundibulum possess finger-like projection called fimbriae, which help in collection of ovum after the ovulation. The infundibulum lead to the wider part of numbula. जो फलोपियन ट्यूब होते हैं वो उनके तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है इन्फंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, तीसरा होता है इस्थमस. इन्फंडिबुलम क्या होता है, नियरर पार्ट होता है जहाँ पे ओवरी फिम्ब्री से कनेक्ट होकर क्या होती है, आगे की तरफ जाते हैं. एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है और इस्थमस क्या करता है, आगे को मूव फॉरवर्ड करवाता है. फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या होता है, वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट जिसको बोलते हैं एम्पुला. द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस. द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड एज अ वोम. द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पेयर. इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द pelvic wall. The uterus open into the vagina through the narrow cervix and the cavity of the cervix is called as a cervical canal, which along with the vagina from the birth canal. The wall of uterus is 3 layer. The first is external genitalia जो कि थिन मेम्ब्रेनस होते हैं, पेरीमेट्रियम के बने होते हैं. मिडिल थिक लेयर होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, मायोमेट्रियम के बने होते हैं. इनर ग्लैंडुलर लेयर होते हैं जो एंड्रोमेट्रियम के बने होते हैं, दैट लाइन द यूटेराइन कैविटी. द एंड्रोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग menstrual cycle while the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of baby. The female external genitalia include mos pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris. Mos pubis is the cushion of fatty tissue covered by the skin and the pubic hair. The labia majora are fleshy fold of the tissue which extend down the mos pubis surrounded the vaginal opening. Labia minora are pair fold of the tissue called labia majora. The opening of vagina is often covered partially by the membrane called hymen. The clitoris is finger-like projection
which lies at the upper junction of two labia minora and the urethral opening. The hymen is often torn due to the first coitus intercourse. However, it is also broken by the sudden fall, jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sport like horse riding, cycling. In some women, the hymen persists even after the coitus. The presence and the absence of hymen is not a reliable indicator of virginity, which is called as a sexual experience. तो हाइमन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी टूट सकता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है जो चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।